Good morning, students. I'm Smina Alam, teacher GHS Nova Gabra. Dear students, क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक से हमने जो प्रोज का लेसन नंबर 7 द मर्चेंट ऑफ वीनस लिया है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े. तो कल का जो पैराग्राफ हमने देखा उसमें जो ये 2 फ्रेंड्स होते हैं, आखिरकार इनको शाइलॉक जो होता है पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है. तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है. तो नाउ विल स्टार्ट द reading of 3rd paragraph. Antonio replied, I am as like to call you so again, to spit upon you again and spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as a friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break you may with better face exact the penalty. Why, look you, said Shylock, how you storm. I would be friends with you and have your love. I will forget the shames you put upon me. I will supply your wants and take no interest for my money. This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock, still pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and their sign in marriage spot abound, that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. Content, said Antonio, I will sign to this pound and say, there is much kindness in the Jew. Bassanio grew angry when he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond, but Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty. As soon as the bond was signed and the money taken, Bassanio left for Belmont. There he succeeded in winning the hand of Portia, who indeed fell in love with him the moment she saw him and was happy to be asked to marry him. A day was fixed for the wedding. But before the wedding there came a letter from Antonio bringing dreadful news. Antonio's ships had not been seen at sea, and since the 3 months mentioned in the bond had passed, the Jew had filed a suit against Antonio claiming the penalty of pound of flesh. Antonio wrote to say before he died he wanted to see his dear friend Bassanio and bid him farewell. तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे. तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी किस में, उर्दू में. एंटोनियो ने, जब एंटोनियो को ये कहता है कि मैं आपको दूंगा पैसे, तो उसने जवाब दिया कि तुम्हें फिर ऐसा ही कहूँगा, फिर तुम्हारे पर थूकूँगा, फिर तुम्हारे पाँव पे ठोकर मारूँगा. अगर तुम मुझे पैसे उधार देना चाहते हो तो ऐसा मत दो जैसे किसी दोस्त को उधार दे रहे हो, बल्कि मुझे दुश्मन ही समझकर पैसे उधार दे दो, ताकि अगर मैं समझौते के खिलाफ वर्जी करूँगा तो मैं छाती तान का जुर्माने की मांग कर सकता हूँ. अब देखो, शाइलॉक बोला, तुम कितने गुस्से में आ रहे हो. मैं तुमको दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता हूँ. मैं इन बेइज्जतों की तरह नहीं हूँ जिस तरह तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरी इज्जत पर थूका. मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा और अपने पैसे के बदले कोई भी सूद वसूल नहीं करूँगा. तो मेहरबान होने की वजह से जब ऐसी पेशकश वो करता है तो एंटोनियो हैरान हो जाता है कि शाइलॉक को इतनी शफकत का ड्रामा कैसे आ गया, ये जताते हुए कि वो कह रहा है कि एंटोनियो का प्यार हासिल कर रहा है और उसको पैसे 3,000 ड्यूटीज जो है वो दे रहा है और बगैर किसी सूद के वो वसूल करेगा. सिर्फ एंटोनियो इसके साथ एक वकील को लेकर इसके साथ जाएगा और एक अहदनामे पर दस्तखत करेगा. एंटोनियो एक मुकर्रर दिन के अंदर पैसे वापस नहीं करेगा तो इस जुर्माने की शक्ल में 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा उसके जिस्म के किसी भी हिस्से के काट कर देना होगा. ठीक है, एंटोनियो ने कहा, इस अहदनामे पर दस्तखत कर दूंगा और कहूँगा कि एक यहूदी में बहुत बड़ी शफकत और मेहरबानी है. जब बसानियो ने यह सुना तो उसे गुस्सा आया. उसने एंटोनियो से इल्तजा की कि वो इस तरह के अजीब अहदनामे पर दस्तखत ना करे. इस तरह करके वो अपनी जान जोखम में डाल रहा है. तो एंटोनियो को यकीन था कि कोई भी जान जोखम में नहीं डाल रहा हूँ. वो खुशी से इस जुर्माने के लिए राज़ी हो जाता है और जैसे ही इस अहदनामे पर दस्तखत किए गए और पैसा लिया गया, बसानियो बेलमाउंट के लिए निकल पड़ता है. तो वहाँ वो जाकर शाइलॉक जो होता है
پورشیا کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پورشیا جو ہوتی ہے وہ بھی انٹونیو کے ساتھ بسانیو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور شادی کے لیے دن بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن شادی سے پہلے ہی انٹونیو کی طرف سے ایک خط آ جاتا ہے جس میں ایک بھیانک خبر ہوتی ہے کہ انٹونیو کے جہاز سمندر میں دکھائی نہیں دے رہے، چونکہ اہدنامے میں مذکورہ 3 مہینے جو وہ بیت چکے تھے، اس لیے یہودی نے پونڈ گوشت کے جرمانے کا دعویٰ کرتے ہوئے انٹونیو کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ انٹونیو نے کہا کہ خط میں لکھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے دوست بسانیو سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے جو بسانیو ہوتا ہے وہ بلماؤنٹ سے چلا آتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ ایوری باڈی ہیز گاٹ اٹ۔ تو ہم اس کے ورڈ مینس اس میں ہے جو پرفیکٹلی ہو گیا پوری طرح سے، چیئرفلی خوشی سے، فکسڈ مین مقرر کرنا، ڈیڈ فل ہوتا ہے بھیانک، مینشنڈ مذکورہ، سیوٹ مقدمہ، اور فیئر ویل الوداع، ایڈوائس مین نصیحت۔ تو یہ تھا ہمارا 3rd پیراگراف۔ تو کل ہم اس کا لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے۔ آئی ہوپ ایوری باڈی ہیز گاٹ اٹ۔ تھینکس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔